Okay, so as you know, this session is for HPCL group task, and I am providing you the tasks which are being asked in HPCL only. So let me give you the task. Let me share this task on your screen. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me a Yes, sir. second. Okay, I think some issue is popping up. I don't know. Okay, is it visible to you now, this task? Yes, sir. No. No, It is sir. visible to you now? No, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So I'll Yes, give sir. you Yes, 2-3 sir. Yes, minutes. sir. I'll give you 2-3 minutes. After that, each one of you is to introduce the topic. Each one of you is to introduce the topic. And today, because the group is large, what we will do is you will introduce the topic, number one, and then you will speak something about the topic. I'll give you 2-3 minutes to each one of you. Listen me carefully. Today, what you will do, you go through this VT enterprise task. First, you will introduce the topic, and then you will talk something about the topic. I'll give you 3 minutes each. We'll not have discussion. 15 students cannot do discussion. And then I'm going to give you individual feedback on the basis of your introduction and what you talked about the topic. So give yourself 2-3 minutes and then we come to this. Hello. Am I audible? Hello, sir. Sir. Hello, sir. Yes, brother, you are audible. No, I want to say. No. No, I'm not starting the topic, but I want that. Actually, there is in YourPedia video, there is not a single video on capacity planning. So we should discuss this. So Let's just do this right now and afterwards in the study group. Yeah, Ankit, you have something to say? No, sir. Today we'll discuss this VT enterprises, and next time when you do this, sir, please do topic on sir capacity planning. Sir, no single video. Capacity planning, you send me capacity planning. It's there in YouTube, but that will be viral. No, Sir, I have sent the topic. Topic you have? Capacity planning? Sir, I have sent you the message already, sir. Okay. It is Do that today, don't worry. Okay, sir. Okay. सर आई थिंक डिस्कशन इस पे हुआ है बट शायद यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है सर ये कैपेसिटी प्लानिंग वाला एक ही वीडियो हुआ है बस यूरोपीडिया में जो सर लॉगिन करते हैं ना उसमें एक वीडियो नहीं है नहीं कैसे पता है उसमें कैपेसिटी प्लानिंग पे नहीं है यस सर बट आई हैव डिस्कस्ड हम लोग वाला डिस्कशन नहीं है सर शायद उस पे मतलब एक वीडियो है सर यस ओके okay so now what I will do is I'll go one by one with each one of you और जैसे किसी का कंप्लीट होगा तो मैं फीडबैक दूंगा the moment I give feedback other fellow will follow that feedback and make the change in his pattern. I'll start with first and I'll give his feedback. The moment his feedback is over, I mean he will be talking about introduction and body, and then after that I'll give feedback to him and others will keep on changing the mistakes and all these things. So I'll go one by one, right? Are you okay with this now? Sir, we need some more time, like 2-3 minutes more. Okay, done. I give you 2-3 more minutes, huh? Go for it.
Okay, so anybody can start now. Sir, I want to start. Yeah, Kushagar Kushagar. Vashisht. Go ahead, go ahead. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Kushagar Vashisht, and I would like to initiate this conversation. There is a problem given to us, and it is a product-based company which is finding difficult to sustain. And there are two factors that two departments that we should work on. First is the HR or human relation part, and second is the sales and marketing part. So these are the two things that we need to frame policies regarding. So by briefly reading, taking a glance at the problem, there are two particular things. There are some internal factors and external factors. The internal factor precisely involves the R&D and the HR part, and the external factor involves the competition part and the personal relation part of the company with other firms. So what we have to find solution to all these problems. And now I open this conversation, and I hope that you would provide rightful intel, sir. And now, Kushagar, you have to no. Kushagar, you have to speak about the topic also now. Shall I go, sir? Yeah. Okay. So regarding the internal factors, there are two departments, as I've said earlier, that there is R&D and human resource department. So what we can do, few of the solutions that I can think of is recruiting fresh blood, increasing the infrastructure with the technological advancement and development, and leveraging big data mining so that we could come up with a fresh survey. And for human resource part, what we can do, if there is a necessity in the extreme case with emotional maturity, we could hire and fire people. We should develop effective training program for upskilling our employees, take regular feedback from our workers, and build a complete cultural vision that a holistic environment is being created. For external factor, what we can do, we can make a competitor's SWOT analysis where we could exploit their weaknesses. We could provide better customer services for our earlier potential customers, and look for making strategic alliances. For personal relation activities, we can identify our area of expertise and work on our prime factors, and pinpoint the target audience that where we should go and sell our products, and identifying proper media outlets from where we should advertise. So this is the way I think we can come up with every possible solution to the things that we are facing right now. Thank you, sir. Okay, now let me give you the feedback, Kushagar, to you. Kushagar, introduction could have been better. Introduction, okay. You did not give very good introduction. I mean, you could not provide a good, vision of this entire thing. You said it is a product-based company. From where you could see that? Sir, it is a solution system. And earlier also, sir, I asked you, sir, where did you comprehend it? And I told you this is a product-based. Yes, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से पता लगा तुम्हें? सर, कंट्रोल सिस्टम सोल्यूशन मतलब ऐसा जो आपने एक्सप्लेन करा था, जो मैंने समझा सर, उसमें ये था कि सर कंपनी सोल्यूशन ढूंढ के दे रही है लोगों के, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होगी, तो ऐसे ही मैंने तो Okay, then I think we can always say like this. Okay, friends, yes, we are talking today about a VT enterprise company. Right, it as the case study looks like, it may be product or service based company, right. And it is very old company and with good turnover, right, and it is presently facing couple of problems, and a couple of problems which we can identify are related to training part of the its employees. Right. R&D is the another domain where we need to improve. The methods being followed are old methods. Design to commissioning time taken is very large, and also it is facing competition from some outside companies, especially Chinese companies, and we are losing our old customers and stakeholders like public sectors. So we need to work on HR part also. We are losing our customers also and employees also. So friends, the task which is given to us is like we have to identify the internal external factors which are influencing the performance of company and prioritize these. Also, we need to provide the solution to any internal and two external factors. So in my opinion, the two most important internal and external factors are, internal can be, HR related problems, why employees are leaving, and then related to, establishment of R&D wing of company. External factor can be how to meet the competition from outside, and how to make the collaboration with our this. तो बड़े clearly define नहीं किया कुशागर आपने, बहुत clearly. Sir, I have a doubt, sir.
सर लास्ट टाइम जब सर मैंने इंट्रोड्यूस करा था पिछली जीटी में, आपने कहा कि मेरे को थोड़ा और कंसाइज करने की जरूरत है सर। आज मैंने जो लिखा हुआ है वो बोला बिल्कुल भी नहीं सर, मैं सीधा स्ट्रक्चर में और सोल्यूशन में चला गया सर। तो इन दोनों का अमलगमेशन करना है क्या सर? थोड़ा तो उसमें से भी बोलूं जो दे रखा है। यस। अच्छा, देखो वो केस स्टडी टू केस स्टडी बेस्ड होता है, इसमें बहुत चीजें दे रखी हैं इसमें। ओके। पिछली बार जो केस स्टडी आपका आया होगा दैट सर मस्ट बी वेरी ब्रीफ, या बट राइट यहाँ पे तुम देखो वो itself it is talking about two internal, two external. You see there are so many things he is mentioning in this case study. R&D is mentioning, Chinese company is mentioning, PSU problem is mentioning. Then he's saying that okay, design part mein there is a issue. He's talking about the people leaving, quitting. So if you want to tell about the issues, it is going to take one sentence. राइट सर। Whereas the previous case studies you must have done, उसमें ज्यादा नहीं होगा, उसमें होगा कि सब ऐसे करना है तो क्या करें इसका. अंडरस्टूड That depends what case study is giving, right? And then you could have elaborated on this. Anyhow, this is how you have to talk about the problem to clear ho jaye. I mean the task should be defined properly. So anyhow, next candidate now. थैंक यू सर। Maninder. Yeah, Sir, Maninder. Good morning, friends. Yes. My name is Maninder Pacha. I am glad to start the discussion about the VT enterprises which is facing some problems which may be internal or which is internal or external factors. I want to start that VT enterprises is basically started about 30 years ago by two people. Now it is a big company about over turnover 750 crores. The internal factors which are being that the poor trained service engineers are there. There is some problems in the R&D sector, which has become slow because of some old methods. The old methods the company are following, and it also have external factors like competition from a Chinese company, which is in an unorganized structure. And the main problem is that we are getting help from the PSUs, which are also leaving our hands. And other thing is that customers and employees are leaving too. So we have to find the solution. So I open the house for the discussion, and thank you. Now tell about the solution. This thing also, Maninder. बीच में क्या points Yes, the internal factors which we should command our company so that we can overcome through the problem which are going on, something like that. That the HR and R&D part is very lagging. So I would like to suggest that for internal factors, the training method should be improvised with the new technologies, and we have some old methods to design our product or service because of that. So the new method should be adopted with the help of some other companies, like small companies, like startups, and which are going in our India through the Startup India program. And marketing and advertising is also adopted as external factors because of we are leaving our customers, and customers are our basic need of our company, so that we can attract again and we can regain our faith in the customers. Thank you, sir. Okay, so one topic can be introduced in many ways. Now, just now I gave introduction to Kushagar, I giving another introduction. You can always say that, friends, we are given the case study here of VT Enterprises, 30-year-old company, and now it is having good net worth. And friends, this company presently is facing problems which we can put in the two broad categories, internal and external problems. At the end, we need to prioritize these out of many internal problems. We need to prioritize and provide the solution to two internal and two external problems. So to mention some of the internal problems as mentioned in the case study are the problem associated with the employees, the problems associated with the R&D part of the company, the problems associated with the personal relation development of the company, and also related to the designing part. I mean, design to commissioning time taken is very large, and also service part is poor by the team, by the company. As far as external customer problems are concerned, friends, one of the main factors like retaining our old customers like public sectors, then competition which we are facing from external market, our competitiveness competing with those players which are coming from outside. These are some of the and maybe the marketing also, though it is not clearly mentioned, but
it is related to business enhancement. So maybe marketing also. So these are the some internal and external problems. Now, friends, as far as the prioritization concerned, I think we should discuss all of us, and we should prioritize first 2 internal, 2 external factors out of all given, and then we start talking about the solution. So I open the house for discussion. So you mention all the internal and external factors, and then open the house for them to prioritize. Now, then when you start discussion, you say that friends, now out of numerous internal factors discussed, if you agree with me, then HR part, human resource part, and R&D part, they can be the most important part, internal things which we can discuss with. Yeah, and there is another, that is a service part, that is also very important. So I leave it on your judgment. We want to take R&D part more important or service part more important. So these are the couple of points we prioritize and we go for it. External में तो collaboration and competition. Collaboration and competition मेरे को लगता है ये दो बहुत important है, और ज़्यादा external factor दिए नहीं है उसने. These two can be important, and then you start discussing the solution for this. After solution discussion. Okay, so next. Sir, can I? Yeah, go ahead. Sir, Abhinav, can I go? Yes, go ahead, one by one. Okay, good morning, friends. Today we are here to discuss about solution of a company, actually a control system company. It was earlier started by only 2 people 30 years ago, and the turnover of the company is also 750 crores. Currently, the company is facing problem with many, there are many internal factors, like R&D also became slow, and recently the Chinese company also entered into the market. But one thing we should notice that they are in unorganized manner. Also, our previous company collaborations we are also losing them. So we can do one thing, like internal and external, we can prioritize them. In internal, we can see like R&D is also slow, and our old conventional method, or the workers are working in old conventional method, and we can work with poorly trained service engineers. We can train them, and the external thing is people leaving and Chinese market. So what we can do is we can start by variation of products. We can make good products in various fields which can attract many people, and also we can do is we can conduct a market survey which will help us to analyze what product we can actually produce. And also one more thing, that online marketing we can tackle, that will help us to solve the problem. Okay, so Abhinav, I give you the feedback. एक तो अभिनव energy level was low, and दूसरा आपको जो introduction part है ना, that has to be, I told you, directional, more directional. Yes. And body has to be more elaborate. Yes. Direction in the sense के जैसे tree बनता है ना, tree बना के उसको और specific बनाते चले जाओ. Wherever you can give some kind of classification, some kind of distribution to the people. Yes, sir. That will go in their mind. Energy level थोड़ा सा बढ़ा लो. Content तो हम discuss कर ही रहे हैं, हर चीज का content discuss कर रहे हैं. Energy level बढ़ा लो and start thinking something new. Like I tell you, if you go on Google out that what are the methods which you can follow to reduce the time taken from design to commissioning. If you Google it out, you will find that lab to market, early to market, quick to market, बहुत सी terms आएंगी. And if you use any of that term in the your GT, they will get impressed. So task तो तुम्हें पता ही HPCL ने पूछना है. Why don't you go and Google it out that what are the various methods to reduce the time taken from designing to commissioning? That is the problem they have said. What can be the solution? And the moment you Google it out, there will be so many solutions which will pop up. So start doing that on your own, each one of you. That is the creativity you need to show. That should not be even mentioned in our discussions here. But the moment you go there, and if you get that particular, task, you should be in position to participate in that, right? Okay, sir. Okay, next fellow. Sir, Manish sir का एक doubt है sir, छोटा सा पहले. हाँ जी, go ahead. Sir,
सर मेरा जो डाउट था बताया, मेरी क्या थी परफॉर्मेंस वो बताओ थोड़ा। मनिंदर, तुम्हारा मैंने वही बताया था कि तुमने जो बोला सारे के साथ जो तुम्हारा फ्लो था ना, वो ऐसा लग रहा था कि तुम ओवरलैप कर रहे हो चीजों को। कैटेगराइजेशन बहुत क्लियरली नहीं किया तुम लोगों तुमने उसको। कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये है, बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी में आपने इस तरीके से बोलना है कि पॉइंट नंबर वन, सोल्यूशन नंबर वन पॉइंट। अब बॉडी पार्ट में तो सोल्यूशन दे रहा है ना वो, तो सोल्यूशन कहाँ यस से सर। देंगे? इंट्रोडक्शन एंड बॉडी इज डिफरेंट। बॉडी इज यू आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। जैसे चाइनीज कंपटीशन है, तो क्या करना है उस कंपटीशन का? व्हाट डू यू थिंक? ये आपका डिजाइन टू मार्केट का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास उसका? उस तरह सजेस्ट द सोल्यूशन। ओके सर, तो आपने मतलब बॉडी इंट्रोडक्शन इंप्रूव में करना प्रॉब्लम है। बतानी है, प्रायोरिटाइज करना है, और उसमें प्रायोरिटाइज भी आप सोल्यूशन में करना है, प्रॉब्लम्स बतानी है बस इंट्रोडक्शन में। ओके सर। नेक्स्ट, Mayank Okay, sir, friends. sir, With your गो sir, वन can बाय I, वन, डोंट वरी। sir, can I go, Mayank? यस यस, गो अहेड। Okay. So hello everyone. Like today we have a case study that हमारे पास एक वीटी एंटरप्राइज की केस स्टडी है जिसमें अभी फ्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक उनका जो सर्विस इंजीनियर है वो पुअरली ट्रेंड है, उनका आर&डी स्लो है, वो ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है जो उनके पुराने कस्टमर्स थे वो भी जा रहे हैं, और उनका जो मेन स्ट्रेंथ थी लाइक जो पीएसयू से साथ उनका जो टाइटल एंटाइटल था वो भी उनका कम होता जा रहा है। तो इन बेसिकली प्रॉब्लम पे हमको सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करा जाए तो मेन हमारे इंटरनल फैक्टर्स आएंगे। वो ये रहेगा कि हमारा जो पुअरली ट्रेन सर्विस इंजीनियर है, जिससे क्या हो रहा है हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मार्केट में वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और सर सेकेंडली जो हमारा होगा, हमारा आर&डी स्लो हो रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उन पे हम अच्छी ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो कस्टमर्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। और थर्ड वन इज लाइक हम अपना ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में। तो जो जिससे क्या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमको ओवरटेक कर ले रहे हैं। और अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करी जाए, हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली कंपटीशन है। जैसे कि हमको इसमें दिया गया है केस स्टडी में कि हमारी चाइनीज कंपनी मार्केट में आ रही है, और ऐसा हमको पता है कि चाइना में जो हमारा सप्लाई चेन है बहुत फास्ट होती है और वो हमारी स्लो है, तो उससे हम पीछे हो रहे हैं। एंड सेकंड वन इज द कोलेबोरेशन विद द पीएसयू। लाइक पीएसयू बेसिकली काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, बट वो अल्टीमेटली अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। जब उनको यहाँ दिख रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम उसको कोलेबोरेशन हटा रहे हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करी जाए तो उसमें मेन हमारा जब हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो पहले हमको होना चाहिए इम्प्रूव मार्केटिंग। और देखिए हमारा जो है इनकम अच्छी खासी थी और हम पुरानी कंपनी है, तो हमारा जो कस्टमर रीच होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम अपनी मार्केटिंग पे इम्प्रूव करेंगे तो अगर उन तक हम अच्छे से पहुंच पाएंगे तो हमारा जो है इम्प्रूव होगा। एंड सेकंड वन इज लाइक जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनसे हम एक बार पहले अपना फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहे हैं। बिकॉज वो हमारे पुराने कस्टमर हैं तो उनको अच्छे से पता है हमारे बारे में कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो रहे हैं, तो वो हमको अच्छा फीडबैक देंगे और उस पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज लाइक अगर हम और उसकी बात करी जाए इम्प्रूवमेंट की, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग टू अवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जिससे क्या होगा हमारा टाइम कम होगा। एंड द सेकंड वन इज लाइक जो हमारा आर&डी सेक्टर जो डाउन जा रहा है उसके लिए हम अपना टेक्नोलॉजी के लिए हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। लाइक जो आईआईटीज हैं या जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनमें हम अपने आर&डी सेक्टर को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा इनोवेशन भी आएगा। नाउ आई ओपन हाउस टू एवरीवन टू फॉर द हेल्पफुल डिस्कशन। थैंक यू। मैं सारा ठीक था, लेकिन एक जो प्रायोरिटाइज करना था ना, वो किस क्राइटेरिया पे प्रायोरिटाइज किया वो बताना जरूरी है। आपने इंटरनल फैक्टर बहुत से आइडेंटिफाई कर लिए, एंड देन यू आर आइडेंटिफाइंग टू, you are prioritizing two. Now on what parameters you are identifying these two, that also you think of. ओके सर। एंड बाकी सोल्यूशन भी अच्छा आपने डिस्कस कर रहे थे कि आर&डी है तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक तो हम अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वर्कआउट करें। अगर आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वी नीड टू गेट इट अपडेटेड, न्यू वर्जन्स। यस सर। Number two, we need to do SWOT analysis of our competitors also, like Chinese company, SWOT analysis. Number three, maybe the जो research organizations हैं हमारे vicinity में, we can seek collaboration and maybe outsourcing to those like IITs and research organizations, or outsourcing and collaboration दोनों। These points were there, right? The rest was okay. ऐसा फ्लो वाज ओके लाइक। वो ठीक है, बाकी सारा ठीक। Okay, next. Sir Rajesh. गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कार्तिक नाथ शर्मा, और यहाँ पे हमें एक केसेस
Not audible. Sir, I 1 think you're minute. not audible. Sir, Hello, sir. Am I audible right now? Go ahead. can I take 1 minute? Just actually, sir. मैं go on. एक्चुअली सर मेरी 12वीं से क्लास है, तो मैं अभी डिस्कशन लीव कर सकता हूँ। जिनका हो गया है और अगर जाना चाहते हैं दे कैन लीव, देयर इज नो फर्दर डिस्कशन नाउ, यही चलेगा अभी। जिनका हो गया है एंड इफ दे वांट टू विलिंगली लीव दे कैन लीव। ओके सर, ओके कार्तिक गो अहेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कार्तिक नाथ शर्मा। और यहाँ पे जो हमें केस स्टडी दी गई है वीटी इंटरप्राइजेस की, जिसको दो लोगों ने स्टार्ट किया था 30 साल पहले। एक कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशंस की ये कंपनी है, जिसकी अभी जो इनकम है वो नियरली 750 करोड़ है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हमें इंटरनली और एक्सटर्नली बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना है और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो आई ओपन द डिस्कशन फॉर ऑल। सर पार्ट 2 जो फिर मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनली फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि जो तीन चीजें मुझे जो जहां तक लगती है वो इंटरनली फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। पहली बात, जो R&D टीम है वो काफी स्लो है। जो दूसरी पार्ट है इंटरनली मुझे लगता है प्रॉब्लम्स की, वो है कि पुअरली ट्रेन्ड सर्विस इंजीनियर। और जो तीसरा है वो जो हमारा ओल्ड मेथोडोलॉजी है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को बनाने में टाइम ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नली फैक्टर्स की बात करें तो पहली चीज जो है वो PSUs का अलग होना हमसे, जो कंपनीज के पहले ज्वाइंट वेंचर्स थे वो अब अलग हो रहे हैं। उसके बाद कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों कंपनी को लीव कर रहे हैं। और तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है वो जो चाइनीज कंपनी का मार्केट में एंट्री करना है, वो एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। अब हम एक एक करके इनको ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। तो R&D टीम का में फॉल्ट होने का मतलब है कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो कई हद तक इसकी जिम्मेदार साबित हो सकती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं पास्ट में वो शायद उतने बेटर नहीं है कि हम चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड पे पहुंच सकते हैं कि जो पुअरली ट्रेन्ड इंजीनियर्स हैं, ये भी एक तरह का सब पार्ट हो सकता है एक बैड मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का जो तरीका है अगर वो सही होता तो हम शायद इस पे जो इंजीनियर्स हैं जो पुअरली ट्रेन्ड है उस पे काम कर पाते। और तीसरा है कि हमने इवॉल्व नहीं किया खुद को। हमने जो कंपनी है, कंपनी को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए हम, क्योंकि टाइम के साथ सराउंडिंग में चीजें बदल रही हैं और हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए। तो जो हम टाइम के साथ अपना जो इवोल्यूशन है वो नहीं ला पाए कंपनी में, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहले है जो PSUs हमारे साथ एज अ ज्वाइंट वेंचर्स काम कर रही थी, उन्होंने लीव करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो लगातार डिप्लेशन देखने में मिल रहा था तो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है और कोई भी लॉस में चीजों को नहीं रन कर पाएगा। तो एक ये रीजन है। और एम्प्लॉयज और जो कस्टमर्स हैं दोनों सेटिस्फाई नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस से। और जो थर्ड चीज है वो चाइनीज कंपनीज का आना है, और लेकिन वो अनऑर्गेनाइज है। तो इस पे काफी स्कोप है कि हम अपनी USP को थोड़ा सा बेटर करें और इस पे काम कर सकते हैं। तो हम इसके अब सॉल्यूशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट में क्या है इंटरनल में कि हम HR पॉलिसीज पे काम करें। अगर जरूरत पड़े तो न्यू हाईली स्किल्ड वर्कर्स को लाएं। अगर अगर और चांसेस हैं, अगर मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं तो हम जो ओल्ड ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनको ही अच्छे से ट्रेन कर पाए। शॉर्ट एनालिसिस करें कंपनीज का भी और कंपनीज का, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है। तो हम अभी यहाँ खुद की कंपनीज का ही जो इंटरनल मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर शॉर्ट एनालिसिस करें। हम चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम कर सकते हैं कि हर स्टेप्स पे चेक करें, फिर उसको एनालिसिस करें, फिर आगे बढ़ें। तीसरी पार्ट है कि हम रोबस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मॉडिफाई करें ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़िया हो पाए। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम टाई अप कर सकते हैं IITs NITs से, R&D टीम वहां सेटअप कर सकते हैं। और एक और चीज करते हैं, हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं IITs NITs के जो यंग पास आउट बच्चे हैं वहां से, वो उन्हें हम डायरेक्ट हायर कर सकते हैं प्लेसमेंट्स के थ्रू, वहाँ के TNP डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके।
दूसरी चीज है कि हम मार्केटिंग पे काफी काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है कि जो चाइनीज कंपनीज है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते करते हम चाइनीज इंडस्ट्रीज पे भी काफी हद तक इफेक्ट कर सकते हैं उसको। और मेक इन इंडिया और जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हायर करके एडवर्टीजमेंट में काफी हम हेल्प कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सर। ओके कार्तिक, एक तो बहुत ज्यादा बोला आपने, इतना टाइम वहां मिलेगा ही नहीं, आपको बहुत ही प्रिसाइज बोलना है। नंबर 2, आप इंट्रोडक्शन उस चीज पे फोकस किया जिस पे फोकस नहीं करना था, और जिस पे करना था वो छोड़ दिया। लाइक दो पीपल हैं, 30 साल पुरानी कंपनी है, 750 करोड़ की कंपनी है, ये इंट्रोडक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है। आपने इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई एंड आपने ओपन कर दिया हाउस डिस्कशन के लिए। आपने इंटरनल एक्सटर्नल बोला लेकिन प्रॉब्लम को बताई ही नहीं कि फ्रेंड्स वी आर गिवन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज देयर व्हिच इज वेरी ओल्ड कंपनी बट प्रेजेंटली इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स। वी कैन क्लासिफाई द प्रॉब्लम्स इन टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. The problems which are mentioned in internal are this, the problem which are mentioned in external are this. No, problem is more important. टास्क देखो ना क्या दे रखा है. It is not important कि 750 करोड़ की है या 30 साल पुरानी है, या this is not important. Old company with good turnover, बात खत्म. तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपने बोला टॉप मैनेजमेंट है, कैन बी द रिस्पॉन्सिबल. इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्ट पता नहीं है उसमें कि इज टॉप कंपनी इज द रीजन, तो आप उसको मेन नहीं ले सकते. ये अच्छा पॉइंट है कि टॉप मैनेजमेंट रीजन होगा या हो सकता है, ये पॉइंट अच्छा है जो तुमने बोला, लेकिन वो मेन रीजन है ये कैसे पता लगा तुम्हें? तो दैट गिव्स अ रॉन्ग डायरेक्शन एक्चुअली ऑफ अ डिस्कशन. जो चीज विजिबल है उसके बारे में कार्तिक बात करनी है. आपने जो बीच में इंट्रोडक्शन करना था उसमें प्रॉब्लम्स आनी थी, फिर जो सॉल्यूशन था उसमें प्रायोरिटाइज करते और उनका सॉल्यूशन देते, प्रायोरिटाइज करते फिर सॉल्यूशन देते, दैट वुड हैव बीन बेटर. लेकिन आपके केस में आपका इनपुट्स बहुत ज्यादा आए हैं लेकिन किसी सिंक्रोनाइज वे में नहीं आए हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड, राइट? Focus on those things which are not required, that has to be there in introduction. Okay, next. Sir, I want to say hello. Hello. Yes. I want to. Good evening. Ankit, what Hello. do you say? Sir, I want to say. You want to say first? Sir, I want to start. Okay, let Rajesh and then Ankit you. Yes, sir. So, good morning, friends. I am Rajesh Kumar Yadav, and I take the opportunity to start the discussion. So, friends, जो हमें जीटी का टॉपिक आज दिया गया है वो वीटी इंटरप्राइजेस की केस स्टडी है. ये एक कंट्रोल सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. पहले ये कंपनी काफी फ्लरिशिंग कर रही थी, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी सेल्स में भी डिक्रीजमेंट आया है. तो कुछ जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किया गया है वो कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है. तो इंटरनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे है वो हमारा लेस ट्रेंड इंजीनियर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी काफी स्लो है, और डिजाइन में जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वो भी काफी मतलब ओल्ड मेथड्स यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा कॉस्ट काफी हाई हो रहा है. और थर्ड, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉयज है और कस्टमर्स है, वो भी हमें लीव छोड़ रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं. तो इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है. और एक्सटर्नल जो फैक्टर यहाँ पे दिया गया है कि हम मार्केट में नए कंपेटिटर्स आ चुके हैं लाइक चाइनीज कंपनीज, तो उसके बारे में भी अपन को डिस्कस करना है. तो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन इंटरनल फैक्टर्स में जो मेन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेल्स डिक्रीज होने का रीजन हो सकता है वो हमारा स्लो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट हो सकता है. तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि नए क्रिएटिव पीपल्स को हायर कर सकते हैं, और दूसरे जो भी लाइबिलिटीज है कंपनी पे उनको फायर भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अच्छे से वर्क ना कर रहे हो. तो हमें नए क्रिएटिव आइडियाज चाहिए. और दूसरा, हम जो एग्जिस्टिंग टीम है हमारी उसकी ट्रेनिंग को अच्छा कर सकते हैं. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में फ्रेंड अपन क्या कर सकते हैं कि मार्केट स्टडी कर सकते हैं, कि जिससे कि अपन जो कंपेटिटर्स है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सके और हमारे कस्टमर्स की नीड को समझ सके करंट सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से. और सेकंड, हमें हमारा जो भी जॉइंट वेंचर्स थे हमारे पहले, उनके साथ कोलैबोरेशन वापस से बढ़ाना पड़ेगा, और उसका स्टडी करना पड़ेगा कि मतलब क्यों वो हमें छोड़ के गए, क्या रीजन है. तो इस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू. ओके राजेश, नाउ आपने जो जब आप इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, अगर कोई वर्ड आपको ऐसा मिलता है ना जहां पे आपको लगता है कि उसका सिंपल वर्जन यूज किया, जैसे फ्लोरिशिंग है, जैसे तो फ्लोरिशिंग बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोल सकते हैं बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था पहले लेकिन अब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है.
आप जिस्ट दो, अपने अपनी लैंग्वेज में दो, वो वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो केस स्टडी में दिए हैं वो अंग्रेजी के वर्ड उठा के बताने, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेस आपका स्लो है और आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। जैसे अपन, अपन नहीं होता है, अपन वर्ड हिंदी का प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। तो आपने प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करना है। दूसरा, आपको आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है, फिर सॉल्यूशन देना है। तो आपने प्रायोरिटाइज करने का रीजन नहीं दिया कि भाई जो आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बताई उनको प्रायोरिटाइज कैसे किया। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक केस स्टडी दे रखी है वीटी एंटरप्राइजेस की, जो एक पुरानी कंपनी है और अच्छा जिसका टर्नओवर दिया हुआ है। प्रेजेंटली बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इस कंपनी के अंदर। हमें सारी प्रॉब्लम्स को इंटरनल एक्सटर्नल में कैटेगराइज करके, प्रायोरिटाइज करके किन्हीं दो के सॉल्यूशन देने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको पहले इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरी में इनको बांट के बताता हूँ कौन कौन सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, एंड फिर हम इसको डिस्कस करें और प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज और सॉल्यूशन जो डिस्कशन का पार्ट है, इंट्रोडक्शन का नहीं। लेकिन इंट्रोडक्शन में इंटरनल एक्सटर्नल की कैटेगरीज तो बना दो ना यार, सिंपल, बस वो है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है कुछ आपकी, तो प्रायोरिटाइज आपने नहीं किया, आप सॉल्यूशन पे भिड़ गए। राजेश, पेज थोड़ा बढ़ाओ, एनर्जी लेवल बढ़ाओ, प्रोफेशनली बात करो, राइट। नेक्स्ट, अंकित, गो अहेड। Good morning, friends. I'm glad that I got the opportunity to start the discussion. And basically, basically our study is about BT enterprises, which was originated as a startup company and was working good, but now it is facing some problems recently. It can be due to two factors. I want to divide these problems into two parts: internal problem and external problems. I think if we internal problem, if we look at the last line, that employees are also leaving, and if we consider that, observe that where companies also using old methods. So there is a question that whether work culture is good or not in that company, whether it is updated to meet the current standards, or whether it is recently updated to its technology, new technology or not. That is the problem. First problem. Second is that about trained service engineers. So I think it is a two-paced process. I think the problem here is two ways. I think maybe due to conventional methods, they are unable to know about technology. And once is that, another is that maybe due to poor talent acquisition program by the company. That may be the reason. And next reason I want to focus on R&D. R&D was has become slow. Maybe due to maybe I think it is due to one experienced member leaving the company and not getting sufficient replacement to that person. That may be the reason. So we have to discuss internal factors and external factors, and we have to find the solutions for that. I want to go for part 2. Can I start part 2? Okay, go ahead. So as I mentioned in internal factors, work culture is not good. If work culture would have been good, then employees would have never left. It is mentioned that the last line. And in second method, it is, and the second problem is that it is using old methods. Whether it is using new, why it's not using new methods? Maybe employees are willing to leave because they want to adapt with the new technologies which we require. So that is a second reason. So now it is seen that PSUs, which was once joining head up, is now leaving the company. This may be due to problem in public relation or due to lack of our innovative creativity in R&D department, in product also maybe. So we have to focus on that. So, okay. External factors, sir, are not completed. Sir, I'm not going to solutions. Sir, external factors is that we have to study about competitors, means large competition. That is a factor. So what solution I can give? Internal. Internal is that we have to provide good work culture with good technology. Second, in order to increase production,
old methods, we can gradually replace it with Industry 4.0 concept that I'm not explaining in detail. External factor is that in R&D we can also introduce infrastructure in that. So external is that we can target business model like where there is more sale, where there is more demand but there is no supply. In that we can take the advantage of that situation and we can sell more products so that we can come back to our original. Okay, done, Ankit? See, this case study is all about find out what are the internal external factors they have given, prioritize them, give the solution. Very simple. So most of you are not in position to prioritize. And then you people are creating your hypothetical factors also. जैसे किसी ने बोल दिया टॉप मैनेजमेंट में इशू है, आपने बोल दिया वर्क कल्चर में इशू है, ये तुमने खुद क्रिएट कर दिया यार. वहां पे कहां लिखा हुआ एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड डज नॉट मीन कि वर्क कल्चर में प्रॉब्लम है. इट मे बी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स. लेकिन वर्क एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, वो बात फैक्ट है, वो दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है. अब उसको कैसे रिजॉल्व करना? एचआर डिपार्टमेंट बनाना, आइडेंटिफाई करना उनकी प्रॉब्लम का कारण क्या है. वर्क कल्चर तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई करो ना क्या है वर्क कल्चर है, क्या रीजन है, और उसका सोल्यूशन देना. सो डोंट क्रिएट योर ओन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, डोंट डू दैट. जो दे रखा है वो करो भाई, प्रायोरिटाइज करो, सोल्यूशन दो, बात खत्म. इतना सा करो. वो आप नहीं कर रहे हैं. और अंकित तुम्हारा फ्लो का प्रॉब्लम है और तुमने बहुत ज्यादा चीजें बता दी हैं और उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए हो. ये वीटी एंटरप्राइज बड़ा सिंपल सा केस स्टडी है. फैक्टर उसने दे रखे हैं, प्रायोरिटाइज करो. क्यों तुम्हें लगता है नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 ये होना चाहिए, और सोल्यूशन दो, बात खत्म. ओके, नेक्स्ट. I want to go, sir. Sir, I want to go. I want to go, sir. Okay, go ahead. Okay. Okay, sir. Good morning. There are 2 people, हाँ, एक विश्वनाथ, एक रमाकांत. रमाकांत आप जाओगे, उसका विश्वनाथ. रमाकांत and then विश्वनाथ. Okay, sir. Okay, sir. Okay. First of all, a very good evening to all of you. Thank you for giving opportunity to introduce our group tasks. Our group task is related to VT Enterprises. We have mentioned that there is 2 people who are running a business from last 30 years, and their business is flourishing in that condition. Now there is some issues, and our task is to distinguish between internal and external issues and try to prioritize this. और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर जो इशू है उसमें सबसे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय क्यों छोड़ रहे हैं. क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो मतलब हमारे एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे कर सकते हैं. तो ये सबसे मेजर इशू हो सकता है. तो हम लोग को इस तरीके से स्टेप बना के पूरा एनालिसिस करके हम लोग को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए. आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर अदर्स ऑल्सो. नाउ सर, कैन आई गो फॉर सेकंड स्टेज सर? यस. सेकंड स्टेज, सो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हमारे इंटरनल इश्यूज में जो हैं वो पुअर ट्रेंड R&D ओल्ड मेथड है. और मेरे हिसाब से जो एक्सटर्नल इश्यूज में आने चाहिए वो है चाइनीज कंपनी, और जो पब्लिक सेक्टर है वो लिविंग है, वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आने चाहिए. मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहूंगा कि हम लोग को एम्प्लॉयज को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज क्यों हम के छोड़ के जा रहे हैं. क्या उनको पब्लिक हमारे को मनी प्रॉब्लम है, मीन्स उनको प्रॉपर जो उनकी सैलरी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, या फिर उनको हम लोग को वर्क कल्चर जो होता है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2 पीपल और 750 करोड़ है. तो मेरे हिसाब से अगर उनको प्रॉपर अलोकेशन नहीं हो पा रहा है सैलरी का तो उनको प्रॉपर शेयर्स देने चाहिए कंपनी में, या फिर इस तरीके से कोई चीजें हम लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो एक्चुअली अपनी सैलरी की बेसिस पे सेटिस्फाइड हो. सेकेंडरी हम लोग को जैसे इंटरनल अदर फैक्टर्स को हम लोग को इफेक्ट करना है, जैसे कि R&D है या फिर और अदर फैक्टर्स है, पुअर ट्रेंड्स है, तो वहां पर अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो कंपनीज को जो वर्क कल्चर होगा वो भी अच्छा हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉब्लम से दो चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग पुअर ट्रेंड है और वो है तो फिर हम लोग ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन विद अदर एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं जिससे उनको ट्रेनिंग और R&D मिले. इस तरीके से कई सारी चीजें कर सकते हैं. अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ चले, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में चाइनीज कंपनी का है, जो चाइनीज कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन है. अगर चाइनीज कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन है तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस बेसिस पे है. अगर मार्केट सर्वे करेंगे और चाइनीज कंपनी का स्वेट एनालिसिस करेंगे जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके स्वेट एनालिसिस करके हम अपने स्वेट एनालिसिस से कंपेयर करके मार्केट जो सर्वे आएगा उस बेसिस पे अपने नए प्रोग्राम्स बना सकते हैं और उस बेसिस पे अदर
फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर दिया है जिसमें हम लोग को एक पब्लिक कंपनी, हम लोग को पब्लिक सेक्टर कंपनी जो रिमूव हो रही है, अगर वो पब्लिक कंपनी रिमूव हो रही है तो हम लोग को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों जानना चाहती है। तो उसके लिए हम लोग एक टीम बनानी चाहिए और उनको उनके पास भेजना चाहिए जो उनसे बात करे और उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। उनको भी अगर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग उनको प्रॉफिट शेयर बढ़ा के दे सकते हैं। इस तरीके से कई चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग को इस द लाइन बाय लाइन जाना चाहिए और हम लोग को प्रॉब्लम्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, अब देखो इसमें आपका इंट्रोडक्शन तो अच्छा नहीं था रमाकांत। इंट्रोडक्शन आपने बहुत हरिडली बोला और डिटेल में बोला भी नहीं। आप भी उसी चीज पे फोकस करने लग पड़े। 2 लोग हैं, 30 साल से पुरानी कंपनी है। आपने क्लियरली प्रॉब्लम्स को डिमार्केट नहीं किया, दे के रखी है प्रॉब्लम्स, बहुत क्लियरली मेंशन है उसने। R&D से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स। हमारा जो सिस्टम बहुत स्लो है, डिजाइन टू कमीशनिंग बहुत स्लो होता है। हमारे इंटरनल भी HR रिलेटेड इश्यूज हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये हैं, इंटरनल फैक्टर्स ये हैं। अब फ्रेंड्स आई विल ओपन द हाउस जिसमें हम प्रायोरिटाइज करें इनमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे चलें और प्रायोरिटाइज किया। आपने प्रायोरिटाइज भी नहीं किया और क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हो ये भी नहीं बताया आपने। टॉप 2 इंटरनल प्रॉब्लम, टॉप 2 एक्सटर्नल प्रॉब्लम कौन सी हैं वो आपने नहीं बताया। कई बार आप अगर कोई ऐसी चीज उठाते हैं जो किसी ने सोची नहीं, आप ही ने उठाई है, तो उसका क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज company has also entered the market, but they are working in unorganized manner. So friends, I want to discuss with you, what do you mean by that? Does that mean that Chinese are getting an edge by working in unorganized manner? And if so, should also we follow those tactics? What is your opinion on that? ये एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है कि जो चाइनीज का अनऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करना है, क्या वो उनको हेल्प कर रहा है? अगर कर रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये आप अपने टीम से पूछो। तो ऑब्जर्वर जो है इस चीज को अप्रिशिएट करेगा कि इस लड़के ने कोई नई चीज सोची कि भाई ये दिया क्यों है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर पे काम कर रहा है तो कोई भी नहीं सोच रहा है लड़का, इसने क्यों सोचा, इसके नंबर मिलते हैं। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट लाइन। अभी सारी केस स्टडीज हमारे पास दी हैं भाई, बैठो देखो और सोचो कि उसमें मैं क्या पूछ सकता हूँ ऐसी चीज जो बाकी कोई नहीं बात कर रहा है। और हर चीज जो दे रहा है उसका कोई रीजन है, ऐसे थोड़ी दे रहा है वो चीज पूछो। तो बहुत इंप्रेसिव नहीं था रमाकांत तुम्हारा। पहले तुम ज्यादा इंप्रेसिव बात पहले तुमने जीटी में, इस बार उतना इंप्रेसिव नहीं लगा मेरे को। राइट, क्लैरिटी मिसिंग थी और आपने बहुत सी चीजें बोल दी, जल्दी बोल दी। थोड़ा आराम आराम से बोलते, क्लैरिटी से बोलते। यस सर। ओके, नाउ विश्वनाथ। Okay, sir. थैंक यू सर। Good afternoon, team. Thank you for gathering here to discuss about a case study which is given about a control system company named VT Enterprise, which is now seeing a little bit of downfall because some of the problems that has been mentioned, which can be categorized into internal as well as external problems. The internal problems are such that we have poorly trained service engineers who have poor and slow R&D methods and old methods and techniques which are being used in our company, which increases the design to commissioning time. And the external problems are the competition, Chinese competitor which is rising, and the PSU and our customers are leaving, which were associated with us previously. Now, I think these external problems are arising due to the internal problems that are in our company. We should focus on improving the internal problems, which in result will improve the external problems. Now, I open the house for discussion. We can prioritize and give solution to each internal and external problems. So, can I go for the second part? Yes, yes. So, as we have mentioned, the internal problems are poorly trained service engineers, so poor and slow R&D, old methods, and also employees are leaving. I want to prioritize the old methods and techniques that are being used because it increases our production time, due to which our production rate also decreases. Secondly, I want to prioritize the poorly trained service engineers, which are not able to provide the level of service that our customers need. So I want to provide the solutions for this. For poorly trained service engineers, we can send our current service engineers for training purpose into some better company or better training centers. And we also have to make some bonds with them because our engineers are leaving. After getting the training, if they leave our company, that will be a major loss to our company. So with bond, we have to set up some training modules and send them to some companies.
And along with it, we have to hire some of the newly trained engineers from other companies who have good knowledge in current era of technologies. Secondly, for the poor and slow R&D methods, we have to contact best professors and faculties from our top institutes like IITs, and also hire the PhD and MS scholars who are doing their research in the current techniques. And for the we have to implement the automation, adapt the automation, which will reduce our production time and increase our production rate as well. And also we have to see what our competitor companies are doing using the facilities and techniques. And in the external factors, the Chinese company is emerging competitor. We have to do the SWOT analysis and market analysis. Why the Chinese are emerging? We have to also target their weakness and threats, and make them our USP, and present it to the PSU and our customers which are living. We have to improve our public relation with the PSUs and present them what steps we are taking for our internal problems, and how we can get better in the near future, and will also be a valuable asset to them. Thank you, sir. Okay. Vishwanath, now introduction was not very impressive. Introduction में you have to clearly demarcate the problems जो दे रखी हैं, उनको mention करना है. You were saying internal problem, if we solve, external will be automatically solved. If we work on internal, then external will be resolved. But you need to tell how you think so. Like Chinese competition may not be solved by solving internal issues. उसके लिए तुम्हें external fight मारनी पड़ेगी. Marketing तो करना पड़ेगा. So you cannot give a statement which may not be correct statement. Or if you give that, you need to tell that why you think so. And keep to the point, very, very to the point. Especially in these kind of case studies which are very elaborate, तो आपको उन्हीं के साथ strict करना है बिल्कुल what case studies are given. That's it. और बहुत ज्यादा चीजें मत बोलो. Stick to some with very much clarity and innovation. कुछ points पकड़ो और उनको बिल्कुल clarity के साथ present करो और उनका आंसर भी ढूंढो. And when you say this is, in my opinion, service is the most important, why you think so? Service, in my case, in my opinion, is the most important internal factor, friends, which we should focus, because if you don't give service to the customer, you lose your present customer also, and future customer also you will not get it. Because service is provided after you have already registered someone or you have taken the money from someone. And that is the reason service is most important. So you should tell why you think this is the most important. And then if you think R&D is most important or HR is most important, why you think so? And then discuss with others. This is how it has to be, Vishwanath, right? ज्यादा बोल रहे हो और कंटेंट एनरिचमेंट कम है उसमें, और क्लैरिटी ऑफ थॉट भी कम है, और कई चीजें ऐसी ला रहे हो जो वहां पे नहीं दे रखी हैं. ये इश्यूज हैं कुछ विश्वनाथ आपके साथ. Okay, sir. Okay, next. Can I go on, sir? Yeah, so Hamad can go and then Manish. Okay, sir. Hamad and then Manish. Okay. Good morning, everyone. I take the opportunity to introduce you all to the given case study. We have been given a case study of VT Enterprises, which is a control system solutions company, and it is seen that it is well established company and having a decent turnover. But recently, it is suffering from several issues. Mainly, the company is having poor trained service engineers. R&D is slow. The company is using old methods, and also a Chinese company has entered the market. The public sector tie-up are leaving, and employees and customers are also leaving. We have to devise these situations, these problems into internal and external factors, and I think we should address them as a department wise, like which department, HR or R&D department, can be associated with this kind of problem. And also for the external situations, we can see that the market and the customers, we should do a proper research and analysis of what we can do to improve the situation. Second part, sir. Yes, go ahead. Okay. We can see that the internal factors which are influencing, which can be improved by the changing the policies of the company, are mainly related to HR and R&D, because HR department is responsible for the training of the engineers as well and the employees. So if it will take care of the employees satisfaction, and the also will try to provide the incentive to the employees for them to stay.
And for better R&D, we have to innovate and modernize with the current situation, with the current scenario, so that we can stay head to head in the competition with our competitors. So these were the two things, R&D and HR department for the internal. For the external, I think we have competition from the China companies. It has been seen that it has been given that recently they have entered and they're working in an unorganized manner, which means that they're not having a current market hold. And since we have been there in the market for 30 years, so we know already about the customers, we have the market hold, but the thing is we are not able to update ourselves. So what we should do is we should try to exploit the weakness, that is they are working in an unorganized manner. So we should try to do the SWOT analysis of that company, and we should try to exploit their weakness and try to update our product in accordance with that, in accordance with them, so that we can be in the competition. Also for the loss of the customers and employees, I think the loss of customers is because of our product, which was not much innovated, and also it can be related to the service that we have been providing them. So we have discussed it in the HR department, that the service and the feedback is very important. So we'll train our service engineers accordingly, so that it will enhance customer satisfaction and trust. And also the feedback is very important for the customers, from the customers. So it will help basically to retain the customers. That's it. Okay. So Hamad, you have spoken more or less correctly. The format, both formats were okay. Introduction and body formats were okay. But you need to focus on, if you prioritize something, why you prioritize that way. Why you think that way. So if HR is most important, why HR is most important? Because friends, HR is the most important resource, and if proper training is given to the employees and their morale is enhanced, then other problems, maybe internal problems, may be automatically resolved. Because the service part is also related to the training part of the employees, which further is dependent upon the HR. So if they are trained, particular skills, and then they'll be motivated, they will improve the service also. And maybe once they are trained properly, then they can be used for R&D activities also, that way. So that part only was missing. The rest was okay, Hamad, from your side. Okay, sir. Right? Okay, Manish, go ahead. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष कुमार। जैसा कि आज का केस स्टडी दिया हुआ है, इंटरप्राइजेज जो पुरानी कंपनी है लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिसमें कुछ इंटरनल फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर की अगर बात किया जाए तो R&D स्लो है, पुअरली ट्रेन सर्विस इंजीनियर है और ओल्ड मेथड को फॉलो कर रही है। साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम की बात किया जाए, जैसे कि चाइनीज कंपनी का डिसऑर्गेनाइज वे में मार्केट में आना और हमारे जो सपोर्टिंग PSU कंपनी है उनका साथ छोड़ करके जाना, तो हमें एक एक करके इन सारी चीज़ों को चर्चा करनी होगी। साथ ही साथ हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों को सॉल्यूशन पार्ट में सर। ओके। तो सबसे पहले हम इंटरनल प्रॉब्लम को देखते हुए कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो मेरा कस्टमर क्यों छोड़ करके हमें जा रहा है, क्या प्रोडक्ट में क्या डिमेरिट है, इसके लिए हम फीडबैक ले सकते हैं। अगर वो फीडबैक प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो हम डिजाइन पार्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हम पुअरली ट्रेन सर्विस इंजीनियर को ट्रेनिंग दे सकते हैं और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और HR को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल की बात किया जाए तो हमारे जो चाइनीज कंपनी है उनके लिए हम शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा उनका स्ट्रेंथ पॉइंट है और कौन सा उनका वीक पॉइंट है, और उसमें से हम एडॉप्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ पॉइंट को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वीक पॉइंट को लेकर के हम उसको वहीं पर चोट कर सकते हैं और हम अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक टीम बनाएंगे, जो पुरानी कंपनी हमारे साथ क्यों छोड़ करके जा रहे हैं उसके लिए टीम बना करके देखेंगे क्या उनको जो जरूरत है, क्या कमी है, और वो कमिटी हमें जो भी रिपोर्ट सौंपेगी उसी के अनुसार काम करेंगे। दैट्स ऑल सर। ठीक है मनीष, बोलने का तरीका ठीक था, कैटेगराइज भी ठीक किया, लेकिन मेरे को लगता है और पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते थे। आपने कुछ पॉइंट्स को जो है वो मिस मारा है, उसको आप ऐड कर सकते थे। स्वॉट एनालिसिस अच्छा है, स्वॉट एनालिसिस का आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छा किया है कि स्वॉट को कैसे हमने यूज करना है, किस तरीके से करना है। बट ये वाला पार्ट अगेन कि आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है फ्रेंड्स, और इसलिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करना कि प्रायोरिटाइज करने के कारण क्या है, क्यों इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उसी पे आपको वर्क करना है। बाकी आपका ठीक था, बोलने का तरीका ठीक था, राइट। इसी तरीके से GT जब पूरा होगा तो उसको इंट्रोड्यूस करने की तैयारी करना, ट्राई करना। ओके मनीष।
May I go next? Yes, Nachiketa. Thank you, friends. With your permission, I would like to start this discussion. We are given a case study of VT Enterprises. It is a control system solution company. It is a very old company and has a good turnover. But recently, the company is facing some problems. There are poorly trained service engineers, R&D is slow, we are using old methods of commission, and there is also a problem that a new Chinese company has entered the market. So another problem that the company is facing is that many of the employees, the customers, and also public sector companies leaving. So the objective of our discussion are mainly two. Firstly, we have to categorize these problems in internal and external problems. After that, we have to prioritize them. And the second objective is that first, we should suggest solution for two internal and two external factors. That is how I think we should proceed. Now, I would like to open this house for discussion and gather your opinions. Second part, sir. Yes, sir. Friends, what I think is that the problems there are four internal problems. Service engineers, R&D, and old methods. And the problem of employees and customer leaving can be categorized as internal problems. And external, there are only two external problems in my opinion. There is a Chinese company that has entered, and there is a public sector company that is leaving us. So in my opinion, the priority to the most important internal problem that we are facing is that the employees and customers are leaving, because employees are the backbone of our company and we need to ensure that our core strength remains, कि हमारे employees ही ना चले जाएं, हम काम ही कैसे कर पाएंगे. So for that I think we should first of all do is some morale boosting exercises करनी चाहिए, like कोई outings वगैरह, and मतलब उनकी proper वो करनी चाहिए, grooming करनी चाहिए जिससे उनका morale boost हो. And even after that अगर कुछ employees work नहीं करना चाहते, then we can cut them off. Second problem that I recognize is that our R&D is slow. So for that, I think the most important thing we can do is we can sign MOUs with various research institutes like DRDOs, IITs, so that we can sublet कर सकते हैं हम अपना R&D department. And external problems, since there are only two external problems, I think, but the most important one is that the public sector company is leaving, because वो हमारा एक बहुत बड़ा contract होगा जो हमें छोड़ के चला गया. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे रीजंस पूछ सकते हैं कि हमारी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनको नहीं पसंद आई. एंड सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हम मार्केट सर्वे करें कि कौन सी और ऐसी PSUs है जिनको हमारी सर्विसेज की नीड है. अगर हम उनको ढूंढ सके तो भी हमारा एक वो बढ़ पाएगा, हमारा जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वो बढ़ पाएंगे. एंड फॉर द चाइनीज कंपनी आई थिंक वी शुड गो फॉर स्वॉट एनालिसिस. बट स्वॉट एनालिसिस में हमें मेजरली इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि ये जो हमें मेंशन किया हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट डज दैट मीन कि वो हमारे फायदे के लिए या हमारे नुकसान के लिए. सो दैट इज व्हाट आई थिंक हाउ वी शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम. थैंक यू. ठीक है नचिकेता, काफी अच्छा बोला है, एंड योर इंट्रोडक्शन पार्ट वाज आल्सो गुड, बट मेरे को लगा इंट्रोडक्शन पार्ट कुड हैव बीन लिटिल इलैबोरेट, एंड बॉडी पार्ट काफी अच्छा बोला है, बॉडी पार्ट भी इलैबोरेट है आपका. But don't forget the most important part. I mean, that is to solve, give the solution, because they are focused on two things: how do you approach the problem, and what solution do you give. These two things are most important for them. Don't forget these two most important parts, right? The rest is very good. आपने बहुत अच्छा उससे explain किया है, right? Just follow it. जब आपका पूरा GT चलता है, you follow that particular thing there, right? वो फिर opinions उनके भी ऐड आएंगे ना, तो फिर मैं उससे opinions दूंगा. Okay, Sadavira, I think you are left. Thank you, sir. Oh, sir, I am here. Okay, start, Sadavira. Good morning, everyone. I am Subramanyam. Today, I am glad to introduce today's our group task. The task is about VT Enterprises case study. Here, the VT Enterprises is in crisis due to some problems, like internal problems and external problems. The internal problems are company R&D, improper training to the employees, old methods in design, employee job satisfaction, and company's morality. The external problems are Chinese company competition and leaving of PSUs and customers. We have to prioritize all the problems, and we are discussing among these problems, and we have to prioritize the
problems. Finally, we have to give the solution for the top two internal and top two external problems. I would like to introduce all the members for the discussion. Now coming to the second part, according to me, company R&D and improper training are the most internal factors, and leaving of Chinese company competition and leaving of PSUs are the two most external factors. When coming to the internal factors, company R&D is the heart of the every company. Without proper R&D team, we does not expect good results in the market. So we need to improve our R&D. Next one is the improper training to the employees. Generally, if we give proper training to all the employees, it rectify all the problems directly. Like it may give the good R&D team, and it may improve the methods and design, and it is also increase the technical skills of the employees. So that's why given proper training is important. Now, external things, Chinese company competition, generally we need to sustain in the market by making good products in the market. So we need to give our competition to the other companies, and the leaving of PSUs and customers is the main problem we are facing. According to my view, the solution for the company R&D is we may go through hire and fire policy. By using hire and fire policy, we may recruit some of the new recruiters to our company. It may increase the company's R&D team, and it motivates our team, and it will give the new trend and unique standards product which is sustainable in the market. Now coming to the improper training, we need to improve our training. We need to improve the training of our employees. That's why we may recruit new training team also. By using new training team also, we may give training to our employees. Now, to problem of Chinese company competition, we may do SWOT analysis by making a list of their weakness. We may work on their weakness. If we have a capable of delivering the product which are facing their weakness, we will definitely sustain in the market. Next, leaving of PSUs and customers. Here they mentioned that Chinese company growing in an unorganized way. So we need to give awareness to our PSUs and customers how we are making the product, what is our standards of our product quality, and the durability of our product. That's all about from my side, sir. Okay, so Sadavira, your way of expression was good, but since you have spoken many things in actual GT, you may not get that much of time, and the pace at which you speak, that is little slow. So what you should try to do is you should try to summarize everything in less sentences, so that the most important thing goes out first from you. Okay. Suppose you want to mention 5 points, then identify those 2-3 points which are most important and speak that first with speed, so that at least you get heard by the observer. Okay. That is what you should try to do. The rest, I think this particular thing was nicely shown by you, because you are listening other students also, and now you have made it very nicely. Do it for all the case studies of HPCL, right?